Apologies, people. यार मुझे एक बार okay, I have to do it in the landscape only. Okay. So first of all, sorry for this inconvenience क्योंकि मैं फ़ोन से हूँ, मैं अपने लैपटॉप से नहीं हूँ. Time issue. Okay, perfect. So I guess the live has started, and unexpectedly, I'm live. Not through my laptop, but using my phone, and there's a reason behind it. And we'll talk about the reason. But first of all, hope everyone is doing fine and hope we remember the date today, June 8th. I mean, been 2 years though. I was really, I mean, really happy to see the response, which I still am very happy to see the response which people are giving to 14th June protest, which is supposed to happen on June 14th. I'd request everyone to be there. I'll also be there. जितने भी हैं all over the India, throughout the globe, whosoever can make it, please make it to Delhi. All right. But the sad part is, everyone is so focused on June 14th that I remember actually talking to one of my acquaintance in this particular campaign from with one of the warrior कि यार सुशांत के लिए सबको सब कर रहे हैं 14 जून के लिए एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड बट व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट जून 8th के लिए हम क्या करें देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन the response that I received in return from that warrior is that कि अभी मेरी दी से भी बात हुई है and it's good to focus on June 14th first and then do anything else. ठीक है. I won't count the biasness, and that's one of the reasons I have not pretty much been active because it's only Disha was forgotten big time, and if anyone says no, 14 जून को सब प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं. आज 8th को किसी ने क्या कर दिया दिशा के लिए अपार्ट फ्रॉम रनिंग अ टैगलाइन ऑन ट्विटर और अपार्ट फ्रॉम टैगिंग नारायण राणे. चलो खैर. But just to update, I did go to Malwani, the same spot where Disha was. I didn't go to do any session or put any videos out. That's why I did not. So I did go there. I lit a couple of candles from the warriors who had requested me to do so on their behalf and on my behalf. I paid my respects in person, and I assured her she's not forgotten because this is it's not just Divya, it's not just that the Shah's case is totally buried by the MVA. It is us who are burying it. It is us who are burying it. Shrey, I'm not leaving the campaign. It's just that I have been ठीक है. I mean 14 June is as important as 8 June. So that's all I'm trying to say. So from today, let's put the pressure on the gas. और वैसे भी आज की डेट में जो सिस्टम में हो रहा है, जो इस गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल कह लो, चाहे वो स्टेट कह लो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो पंजाब की हो, या चाहे वो दिल्ली की हो. एक्चुअली मुझे लाइव लास्ट लास्ट वीक ही आना था, बट देयर इज़ अनदर incident that has happened. What actually happened with I was reconnecting. Okay, what happened with Siddhu Moose Wala? एक गैंगस्टर एक एक कनाडा में बैठ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के ऊपर पिस कर रहा है. He is pissing on Indian constitution and law. That's what he did when Siddhu Moose Wala was shot dead. And the sad part is that we just have one particular imagery of Siddhu Moose Wala as a perception in our heads that, oh,
he stated in support of farmers. खैर ठीक है, we'll talk about Sidhu later on, but just one thing, Dildani Mada, Siddhu Moose Wala, you rock, brother, wherever you are. God bless you. Now, we'll talk about him later, but today it's all about Disha. Today, I don't see any Nitish Rane or Rane who are trying to fool us in order to fuel their political agendas. I don't see them standing here or anywhere or even Divya, not just once in a week, I'll do it more regularly. It's just that people have lost their ways. That's how it is. Rane is gayab hai. Rohan Rai came out in the open, gave an interview stating that nothing of that sort happened, which Ranes are claiming, but there was no counter to it. There was no pen drive that was given. Okay? And do we really still think and do we really still feel that sitting shut would bring this so-called Lotus government out of their pit holes and make them act on the crimes that has happened? उन लोग पुराने क्राइम्स को क्या सॉल्व करेंगे यार? नए क्राइम्स हो गए हैं और ओपन मर्डर्स हो रहे हैं अब तो. सोशल मीडिया वेव is not going to work, boss. Get on the ground. For Sushant, that's important, but equally for Disha Salyan. दिशा सालियान के केस को सब भूल गए. सब भूल गए. Everyone has forgotten it. And today मैं पिछले ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से आई एम शट. आई एम सीइंग व्हाट्स हैपनिंग. यहाँ सबकी रेस लगी है. सबको खैर लेट इट बी. सबकी बात नहीं करनी. द ओनली थिंग इज कि लेट्स स्टैंड फॉर दिशा in a true sense, not just to show that I am standing for her, or not just to maybe put a tagline out. That's not going to solve it, not anymore. The way the Indian law and the system and everything is working, do you really think with so much on plate, uh, the government is going to really stand up to your expectations that you say that we have belief in the government, we have belief in the agencies? Do you think? When a threat letter goes out to Salman Khan, and could be a fluke, right? Could be a fluke. Crime branch, crime branch, there, then and there. It's okay, KD Rangalji, you have a point, but in that sense, it's better to bifurcate. Why to give only importance to one particular date just because he was a celebrity? I'm not saying anything wrong to Sushant. Don't misquote me here. Anyone who's listening to this, it's equally important. I'm saying that's my point. So प्लीज थोड़ा सा यार, मतलब सुशांत के लिए तो फिर भी उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी है. दिशा के लिए उसकी फैमिली भी नहीं है साथ में. तो द लीस्ट आई गेस वी कैन डू, राइट? Or maybe there are a few people that I've seen who are only there for Sushant just because उनको फैमिली की नज़र में स्पॉटलाइट में रहना है. मुझे नहीं रहना, इसलिए मैं सेशंस नहीं कर रहा किसी को इम्प्रेस करने के लिए. एंड ऐसे कई और चैनल्स हैं जो अच्छे हैं, जो बहुत सारा इधर उधर से कंटेंट्स लेके आते हैं, सिर्फ सुशांत पे और सिर्फ दिशा पे सेशंस नहीं करते. वैसे एक चैनल से मैं भी एसोसिएटेड था, बट हाँ, अच्छे चैनल है बोला मैंने. बट अगेन saddened to see this, and just writing hashtag India or the country remembers Disha, that's paying your respect. But is there anyone to do something solid about making the agencies work on it? Or that's a lost cause? If we have taken it as a lost cause, that is how it's looking. Because जो हमारे वॉरियर हैं, जिनसे हमारी बात हुई थी दिशा सालियान के प्रोटेस्ट के लिए, जो मैं करना चाहता था मुंबई में करना चाहता था, मुझे ये बोला गया
मुझे एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे कि मेरी दी से बात हुई है एंड वी रियली हैव टू फोकस ऑन June 14th। क्यों बॉस? 8 जून भी तो है ना, कम से कम। इट्स अ रिक्वेस्ट यार, प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज डोंट डू दिस क्लासिफिकेशन बिटवीन दिशा एंड सुशांत। ठीक है, सुशांत के लिए रहना इंपॉर्टेंट है, बट हम दिशा सालियान को क्यों भूल रहे हैं? शी वॉज नॉट जस्ट मर्डर्ड, शी वॉज ऑल्सो रेप्ड। अगर वो क्लियर नहीं है किसी को तो फिर आई डोंट थिंक सो दैट एनी वन हैज बिन फॉलोइंग द केस। Or just because people are so much into getting that cloud from the family of Sushant so that they can feel special for a couple of minutes. Sharon, Disha's family is not obstructing, they are being made to obstruct, and that was supposed to happen because they are being pressurized. That was supposed to happen. I didn't see any of the Mumbai warriors who do regular protests for Sushant in front of Mount Blanc every day. At least, I mean, ये बात ना मैंने हर एक से कही है कि मुंबई वॉरियर्स हैव ऑलवेज बिन देयर, एक आवाज़ पे दे हैव बिन देयर एंड दे ऑलवेज गो, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस। बट टुडे व्हेन आई सॉ दैट all that we have done in the name of Disha Salyan is a tagline, sorry to say, was it looks like a lost cause. And as people have been forgetting a lot, let's bring back the basics. Not the basics like copying wala basics. Let's go back to the neck and corner of the case where we left off and pick it up. If that's how it's going to hold some grip, that's what I want. How can you expect Disha Salyan to get justice? Or how can you even write something like we have belief in agencies that they will solve Disha's case, knowing the fact that Disha case ki FIR is even not there? How to proceed, ये सब पूछते हैं. How to proceed, everybody asks. मुझे एक बात बताओ, अभी किसी के साथ भी तुमने एक्चुअल इनजस्टिस होता हुआ देखा है एंड तुम्हें लगा है कि उसे सही में दुख पहुंचा है? आज अगर आप ट्विटर देखोगे ना, वहां पे लोग टैगलाइन के नाम पे क्या कर रहे होते पता है? ओह, 50,000 ट्वीट्स कंप्लीटेड, 60,000 ट्वीट्स कंप्लीटेड, ओ कंग्रेचुलेशंस, और उसके साथ टैगलाइन। आई नो सिद्धार्थ, सलमान खान डिडंट गेट अ थ्रेट फ्रॉम लॉरेंस बिश्नोई, इतना टाइम नहीं है। वो पागल गैंगस्टर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सलमान खान के बारे में बात करें, बिकॉज ही इज़ नॉट वर्थ डिस्कसिंग। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिशा अ लॉट। मैं फ़ोन से हूँ, नहीं तो मैं अभी ओपन सेशन कर लेता। आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑल गाइज अबाउट इट। आई डोंट हैव माई लैपटॉप विथ मी टिल midnight, but I want to talk about Disha. I want to talk about Sushant. I want to talk about the new movie that has been the new collaboration between Sandeep Singh and Sahil Khan. The exact collaboration wherein writer Raj, one of the co-owners of Think Inc., which happened to be the, क्या बोलते हैं उसको, PR management company for Riya and Sushant. So everyone is working together now. And Think Inc. का INK stands for इम्तियाज निसार खत्री. और उसके बाद एक केस होता है जिसपे actually I will call him a legend, Siddhu Moose Wala. Yes, he was a legend. He's killed out in the open. And I'll explain with each and everything. मैंने कई लोगों को ये बोलते देखा कि ओ सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि उसने विक्की मिदू खेड़ा के मर्डर में उसका इन्वॉल्वमेंट था। सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जला दिया जिंदा। जब पता नहीं होता है मत बोलो प्लीज़। थोड़ा सा, ये मैंने ये मैं यूट्यूबर्स को नहीं बोल रहा हूँ जो सेशन कर रहे हैं, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो कमेंट्स में ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं ताकि लोग इंस्टिगेट होकर कुछ भी बोल रहे हैं अपने मुंह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो अगेन, दिशा सालियान,
primary focus. Please. If it would not have been for Disha Salyan, if it would not have been for Steve Pinto, हमें इतना सब कुछ पता ही नहीं चलता. हम आज भी वही सोच रहे होते कि अरे यार, it would have been Pithani, it would have been Neeraj who have killed them. और यहाँ पे पुराने केसेस में हमसे जस्टिस लिया नहीं गया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नए नए क्राइम्स हो रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें पुराने केस में हेल्प करेगी. उन लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से तो इज्जत से पेश आया जाता है नहीं. अपने ही लोगों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो हाथ हो, या चाहे वो कोई झाड़ू हो. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ थिंकिंग, इम्तियाज़ निसार खत्री, ये सब यार, everything connects to Disha Salyan, and I am surprised with the fact that just because people are not getting that, like attention from a celebrity figure, then they will not talk about Disha. And if you say that I'm wrong, then आज दिन भर में अगर कहीं पे कुछ हुआ हो दिशा के लिए ग्राउंड के ऊपर, please enlighten me in the comment section. Don't hate me. Let the facts do the talking. Once again, rest in peace, Siddhu Moose Wala. You will never be forgotten. That's for sure. And for the people who would want to know about that case, we'll certainly talk about it. But I really want to start with Disha Salyan. Today I'm with phone, not with a laptop, but tomorrow. I always say tomorrow I'll do a session, so I'm not saying anything. I'll see you all soon, and I'm sure it's tomorrow. Please wake up, people. That's my only request. 2 साल हो गए आज उसको गए, एंड चलो ट्वीट करते हैं. आप भी करो, भी करता हूँ. ट्विटर ने ही इस गवर्नमेंट को सुधारना है, और ट्विटर बन गया हमारे लिए कोर्ट. ठीक है. थैंक यू सो मच. सलमान खान को एक धमकी देके मैं भी आता हूँ. ठीक है. ओके. श्रीधर कांबले, सिद्धू मूसेवाला व शेडी बैकग्राउंड, बहुत सारी बातें हैं. उन पे जब आएंगे तब उन पे आएंगे, आराम से डिस्कस करेंगे बैठ के. क्या टेंशन वाली बात है. हमने कोई आपस में लड़ाई थोड़ी करनी है कि अरे नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा सही, वो जैसा कह रहा है वैसा सही. नहीं बॉस, वील पुट आउट एवरीथिंग, वील टॉक अबाउट इट. ठीक है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. अगर दिमाग में बात गई हो तो प्लीज़ समझो कि दिशा सालियान केस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुशांत सिंह राजपूत. दिशा के लिए आवाज़ सिर्फ ट्विटर पे नहीं, अब ग्राउंड पे भी आना ज़रूरी है. केडी जनरल जी, नाइस व्यू फ्रॉम योर होटल रूम. पीछे दिख गया क्या? ओ हाँ, अच्छा अब दिख रहा है. सीलिंग है वो, सीलिंग. सो एज आई सेड, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टैंड फॉर दिशा, stand for Sushant, and stand for everyone who is facing injustice. And also, don't only walk on one side of the coin. All right? Try to walk the entire 360. Don't do a 180. Semis would never win. You have to go full-fledged. Okay? Sharon, I agree. Disha Salyan, God bless her soul. And I'm sure she's not happy. Her soul is not happy. No matter how much you write it on Twitter, how much you do it on Insta, or what I'm doing on YouTube session, until and unless we get on road for her, until and unless we bring a small change of that complaint coming back again, we have done nothing.
So no need to be happy about it. ठीक है? Same goes in Sushant's case. So रही बात, there are people who are asking that, oh, what to do, get on the roads, boss. Farmers, यार तुम एक बात बताओ, तुमने फार्मर्स से नहीं सीखा, चाहे वो क्या जो भी, चलो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो उन्होंने हरकतें करी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट जहाँ वो अपने अपनी बात मनवाने के लिए बैठ गए थे. मैं इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ कि बैठ जाओ, बट अगर आप इतना जज्बा दिखा रहे हो ना कि फाइटर हैं हम, फाइट करेंगे, जी जान लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड पे तो आओ एक बार, नंबर्स तो दिखाओ. और मैं इतना भी कह रहा हूँ, 1-2 घंटे के लिए भी आ जाएंगे ना रोड पे, अगर बहुत सारे लोग, हिल जाएगा सिस्टम. And you guys would see it for yourself, right? So thank you once again. I'll see you soon. I'm not taking a long gap now because even my parents have started to tell me that session क्यों नहीं कर रहा है तू. But just the thing is that this is not my life. I mean, these YouTube can never afford my lifestyle. I'll see you all later. Thank you so much. Let the facts do the talking. One life. साहिल खान से डील हो चुकी है, पता है ना. चलो. सो सबको करियर एंड फैमिली संभालनी है, इसलिए कोई नहीं कराता, डरते हैं कि इन फ्यूचर इट विल डिस्ट्रॉय देयर करियर. दैट्स अ फैक्ट. दैट्स सर्टनली अ फैक्ट. और शायद ऐसा ही कुछ, ऐसे ही थॉट्स उन लोगों के मन में भी आते होंगे जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के किसी एक कॉज के लिए लड़ जाते हैं. बहुत बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल है भगत सिंह. एज क्या थी उनकी, खैर वो तो बहुत ऊपर जा रहा हूँ मैं, बट देर आर लॉट ऑफ गुड हार्टेड पीपल who sacrifice a lot of things to stand for someone. Can a few of us be that, please? Please, is all I'm asking. Because just the internet is not going to work. It is not going to work, no matter what. No matter what. So please. एग्जैक्टली APS उसे येड़ा बोलते हैं, बट द थिंग इज लाइफ सैक्रिफाइस करने तो हम बोल नहीं रहे ना. आपको थोड़ा सा ज़रा सा समय आपके दिन में से निकालने बोल रहे हैं, चाहे वो 1 घंटे का हो या 2. और यार सी, इतने प्रोटेस्ट्स पे हम गए हैं, हमने किए हैं, मैं गया हूँ, इतने सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं वो गए हैं, दिल्ली में इतनी सारी टीम्स हैं, हर जगह, मुंबई में लोग जाते हैं रोड पे, गए हैं ना लोग. People have gone there, right, on the road, and nothing has happened to them. देखो, आधी से ज़्यादा चीज़ें ना बॉस फ्लूक है कि आप प्रोटेस्ट में जाओगे तो आपके साथ गलत होगा, पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा नहीं है. यू हैव योर राइट टू एक्सप्रेस what you feel. That's the right to expression. No one can stop you from that. There is a way to do that. So एक और आइडिया आया है बाय द वे, वो मैं दिल्ली पहुंच के एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर सेशन. लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट्स में जाएं कैसे, तो जो ऑलरेडी बाकी लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, टू वेयर पर्टिकुलर टी शर्ट विच सेज जस्टिस फॉर सुशांत. जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की तो बहुत टी शर्ट्स देख ली, जस्टिस फॉर दिशा सालियान की मैंने आज तक नहीं देखी, तो आई एम गोना मेक वन. एंड आई एम ऑल्सो गोना ऐड जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला बाय द वे. If anyone has a problem with it, I'm sorry, but I'm going to do that. And please, let's start doing protests for Disha as we were already doing for Sushant. 14th है ना, हर महीने की हम 14th या 21st को कुछ करते थे, एक 8th भी जोड़ लेंगे. आई मीन 8th या फिर उसके आसपास वाला वीकेंड आप 1-2 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना यार दिशा के लिए. इतना तो, बिकॉज दिशा केस नीड्स अस द मोस्ट राइट नाउ. So please, I request you all to stand up. Let's do an open session tomorrow.
लेट्स टॉक इट आउट टुगेदर. मैं भी कुछ सोचता हूँ आइडियाज़ कि हम इस किन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. And let's have a discussion tomorrow in the afternoon about it. I'll be able to come live in the afternoon because in the evening I have my flight. So, thank you everyone and keep boycotting Bollywood. मुझे ये देखने को मिला है कि बॉलीवुड की तरफ Yeah, Haripriya, that video I have that too. And मेरे पास हम इस टॉपिक को अभी दिशा का ही रखते हैं. सिद्धू के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे. ठीक है. सो वील सर्टनली टॉक अबाउट इट. वील टॉक विथ फैक्ट्स, वील टॉक ऑन फैक्ट्स, एंड वील कम आउट विथ अ रैशनल कंक्लूजन एज टू अगर वो गलत था तो वो गलत था कहीं चीज़ों में, अगर वो सही था तो सही था, बट वो आतंकवादी नहीं था. उसने किसी की जान नहीं ली, ना ही उसने किसी को डिसीजन लिया किसी को जान से मारने का. सो जस्ट दैट अभी हम परसेप्शंस पे ज़्यादा और फैक्ट्स पे कम चलते हैं. वी हैव टू डू वाइस वर्सा. So thank you for giving your ear to me for a while. I also need Arnab to come back for SSR and Disha. Specifically for Disha. So thank you once again, people. May God bless Disha's soul. Well, I mean, she's definitely in our prayers every other day, but let's do some solid now. A lot of social media fire and a lot of waves have been created, which is a good thing. Let's add on to it. Let's put the icing on the cake. Let's make the impact. And that's my request. Thank you once again, everyone, and one life. See ya.